आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में MCQs नंबर 50 से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो 51 MCQs हमारे पास है, वो है विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग? विटामिन सी। बी कम्प्लेक्स इंक्लूड विटामिन B1, B2, B6 एंड B12. Deficiency of vitamin B1 causes beriberi. Deficiency of vitamin C lead to disease known as a scurvy. Which vitamin is found in body by exposure to ultraviolet radiation and sunlight? Vitamin D. The vitamin which can be most easily synthesized in human body is vitamin D. How does vitamin D help in growing children? It strengthens bones and teeth. The best source of vitamin A is carrot. Which of the following statement is correct? यहाँ पे टोटल 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से एक ठीक है। कौन से ठीक है? इसमें हम देखते हैं कि विटामिन डी हेल्प इन हीलिंग वुंड, ये गलत है क्योंकि विटामिन डी नहीं बल्कि विटामिन के हेल्प करता है हमारे हीलिंग वुंड के लिए। विटामिन सी प्रिवेंट रैकेट, विटामिन सी नहीं बल्कि विटामिन डी रैकेट का जो डिजीज़ है बच्चों में और बूढ़ों में अक्सर ये डिजीज़ पाई जाती है। तो विटामिन डी हमारे रैकेट्स का जो बीमारी है इसको प्रिवेंट करता है। तो सी में हमारे पास ऑप्शन है, वो है विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर क्लोथिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो क्या है विटामिन सी, विटामिन के हमारे पास है, वो क्या करता है हमारे जो ब्लड है इसको क्लोथ करने में मदद देता है। फोर्थ में है विटामिन ई प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए हमारे पास विटामिन ए है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है विटामिन के, नेसेसरी फॉर द क्लोथिंग ऑफ ब्लड। विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन कोट, लिवर, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन तमाम में हमारे पास क्या होता है, विटामिन ए पाई जाती है। पुअर नाइट विजन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए। Which vitamin is provided by sunlight to the body? Vitamin D. Which of the following vitamin is essential for proper bone and teeth formation? Vitamin D. Healing of wound is hastened by vitamin K. The richest source of vitamin D is cod liver oil. Cow milk is a rich source of vitamin A. Which of the following vitamins promote healthy functioning of eyes in human beings? Vitamin A. स्कारवे कैन बी प्रिवेंटेड बाई इंटेक ऑफ विटामिन सी। स्कारवे एक बीमारी है जो कि प्रिवेंट करता है विटामिन सी। जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तब स्कारवे एक डिजीज़ है, वो क्या होगा हमारे बॉडी में पैदा होगा। द डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन caused by diabetes. AIDS virus destroy the day system of human body immune system. AIDS का जो एब्रीवेशन है वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद है द एड्स वायरस इज काज्ड बाय HIV. Iron deficiency caused by anemia. Which of the following is caused by bacterial infection? Tetanus.
Which of the following disease induce immunity? Smallpox. Parkinson is a disease of brain. Acquired immune deficiency syndrome (AID) is caused by virus. Hemophilia means failure of the blood to clot. AIDS virus has single stranded RNA. Myopia is a defect of vision, blurring distant objects. Which one of the following disease is genetically linked color blindness? Which of the following disease is caused by virus? Smallpox. Diabetes is a disease in which the urine lacks insulin. Which of the following is a skin disease? प्लेग्रा। ये एक डिजीज़ है जो कि विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी की वजह से वाक़ा होता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट इन्फेक्शियस? लेप्रोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़? स्लीपिंग सिकनेस। Diabetes is caused due to the malfunctioning of pancreas. Heart attack is caused due to cholesterol. Malaria is a disease which affect them spleen. Leukemia is a disease of the blood. Racket is disease of the bone जो कि कास्ट होता है लैक ऑफ विटामिन डी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वाटर बॉर्न? इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड एंड कोलेरा इज अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। के आज 50 MCQs यहाँ तक अख्ताम होते हैं।